A very good evening to everyone present here. It is indeed a matter of immense pride and joy to welcome you all to the 138th online interactive session, which is also the 108th Leadership Development Program by Corporate Mentor, organized by Delhi School of Professional Studies and Research, TSPSR. I extend my heartfelt greetings to our esteemed honorable guest speaker for the day, Mr. Rohan Thareja sir, Honorable Senior Professor Ajay Kumar Singh sir, Honorable Director of the College, Professor Dr. Mahesh Sharma sir, respected Registrar Dr. R.S. sir, respected faculty members, and my dear fellow students. I Anvi, a proud student of BBA batch 2025 to 2029 at DSPSR, feel deeply honored to stand before you today. DSPSR has always been committed to fostering academic excellence, professional growth, and leadership development among students, and today's session is yet another valuable step in that journey of learning and inspiration. To commence this session on an auspicious note, let us now take part in the symbolic ritual of lighting the virtual lamp. This act represents the removal of darkness and the ushering in of wisdom, positivity, and enlightenment. May this flame of knowledge guide us toward clarity, confidence, and success in the days ahead. Now I kindly request Arun sir to play the virtual lamp lighting video. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुभं भवतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। It is my great honor to welcome our distinguished speaker for today, Mr. Rohan Thareja sir, who is currently associated with GoMechanic.in as lead strategic projects. Sir is a dynamic professional with extensive experience in strategic projects and alliances, key account management, vendor management, business growth, people management, and customer experience. He has previously worked with reputed organizations such as Across Assist, Group M, VDX.TV, and AXA Assistance, where he has led teams driven business expansion and built significantly partnerships with a strong foundation in marketing and management, holding both MBA and BBA degrees from Guru Gobind Singh Indus University. Mr. Thareja sir embodies the spirit of innovation, leadership, and continuous learning. On behalf of DSPSR, I warmly welcome you, Mr. Rohan Thareja sir, and we are truly looking forward to gaining valuable insights from you, inspiring journey and professional experiences today. Thank you. Thanks a lot, Anvi, for this great welcome speech of yours. Thanks a lot. रोहन Hello, sir. Hi. हेलो कैसे हो रोहन Good, sir. Doing very good. Thank you for this opportunity, first of all. let me tell you all people that रोहन was my student in 2011 2011 में student था और आज uh, it's really very great thing to tell you all people that it gives me immense pleasure to learn to see that he's my student and he's working with such a big company with such a big brand as a leader. So, but Rohan, I just want you to kindly enlighten our students with your struggles. जो आपने लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स देखे हैं उसके बाद आप कहाँ से कहाँ पहुंचे हो, ठीक है? Sure, sir. और आप मैं चाहता हूँ कि आप मेंटोरिंग करो हमारे स्टूडेंट्स की, तैयार करो
एक सक्सेस के पाथ के लिए। Sure, sir. I am extremely privileged. First of all, आपने ये opportunity मुझे दी, and I'm again very thankful to you for this. And hopefully, in future, if God forbidden, I'll be very happy to mentor any of the student. Thank you so much, Rohan. Thank you. Over to you. God bless. Thank you, sir. Thanks a lot. We are equally privileged to have as our moderator today Miss Neha, a bright student of BCom Honors, batch 2025 to 2029 at DSPSR. She has consistently demonstrated excellence in academics and co-curricular activities, embodying the qualities of dedication, enthusiasm, and leadership that DSPSR truly values. On behalf of DSPSR, I warmly welcome you, Ms. Neha. We are have you moderate today's interactive session. Over to you, Sneha. Over to you, Thank you so Sneha. much, Anvi. Good evening, sir. Hi, Sneha. Good evening. Thank you. So let's start our session. Sure. So we'll be starting today by knowing your current role in Go Mechanic and what does the typical day of yours look like? So again, sorry to not coming to your question directly, but I would like to introduce myself first of all to whole every student who has joined this session. So I again, as you all know, my name is Rohan Thareja. I have a total experience of 11 years now. I have worked for different companies. I This is my fifth company. I'm currently working in Go Mechanic. I started my career 11 years ago with AXA Assistance India. So you guys might have heard about the name of Bharti AXA Private Limited. Bharti AXA was a conglomerate between Bharti Airtel Group basically, and AXA. AXA is a France-based company. So I started my career with AXA Assistance. For a year, I worked there as an operations coordinator. It was a basic profile that I started my career with, and then I moved to VDX.TV. This is the name of the company now, but at that point of time in 2015 when I joined that company, it was called as Exponential Incorporation. It was also a US based company. Basically, I'll tell you about my role there first of all. So it was a intermediate between an advertiser and a publisher. So online advertising, basically at that point of time in 2015, it was not that much famous. It was not, that industry did not have that much boom. But as of now, today, if you know, online advertising is a must. Whether you call it as a website or a TV ad or an app ad, online advertising is at its boom. So in 2015, I joined that company. It was an intermediate between an advertiser and a publisher. Basically, a website is called a publisher in our language. So I was handling publisher operations manager was my role. I was handling the website owners. I used to coordinate with the website owners daily, basically US, UK, Australia, Canada, US, all these global publishers, and to monetize their website, how the ads would run on their website, how we can monetize their traffic, and get more and more revenue for them. So this was my a very interesting role. When I joined that company, I worked there for 3 years and 8 months, and after that, I joined Group M. Group M is also US based MNC. So basically, in my previous company, I was working for the website owners for the publisher. Here, I moved to a advertiser role. I was looking after the advertisers. I used to get in touch with them. Basically, my profile was Singapore based. I was sitting in the Gurgaon office, but handling Singapore clients. So, all the Singapore-based advertiser I was speaking to, and for a year I worked there. Then in 2019, I joined Bharti Assist Global. It was again a subsidiary of the Bharti Airtel Group, a small company. Basically, it was a very small startup. Bharti has their own all the different segments. Bharti's presence. You have the Bharti Airtel SIM. You have the Bharti AXA, Bharti AXA General Insurance, Bharti AXA Life Insurance, and different companies. The Airtel Thanks app is there, and there are different companies on the Bharti group domain. But Bharti Assist was a very small company. I joined there as an operations manager.
So there were three line of business basically: travel assistance, medical assistance, roadside assistance, and mobile and gadget insurance. So I was looking out in all the four line of business. I was handling the operations. So I worked there for around 2019 till 2025. 6 years I have worked there, but in between the company was taken over by a group of investors, and then the company was called as Across Assist Private Limited. So UK based company, investor group of investors taken over by the Bharti Group. So then the company was called as Across Assist, and that was my fifth company. Now I have joined Go Mechanic. Four months ago, I've joined Go Mechanic. I am basically now coming back to your original question. Currently, I'm into Go Mechanic. I joined this company in June 2025, and here I am looking out as a lead strategic projects. All the strategic projects that the Go Mechanic team takes over, they handles. I am leading those projects as of now. So that is about it about my role. I have given you a brief about my past experience as well. Uh, Over to you. So how does your typical day looks like as a Go mechanic, as Sure. working as a in Go mechanic? Yeah. So my typical day basically here, Abhi, like I mentioned, I'm handling strategic projects. So first project that I'm currently handling is roadside repair. I have handled this profile previously in my previous company. So this is what my role looks like about roadside repair. Basically, is any vehicle that is traveling on road, that a person is traveling and vehicle is stranded on road, anything that can be repaired on the road stands for a roadside repair services, which can be your flat tire, that can be your dead battery, that can be your fuel delivery, or any other services that can be given to a customer on road. So we have the services pan India. I started. I'm basically, as I've told you, I've joined 4 months ago, and now I've got around 20 cities. I've got this process live. So I got the I mean I got an award last month for basically as employee of the quarter, and within joining 3 months I've got this award because I've got these 20 cities live for this process, and I have got the network as well, the vendor network as well, vendor management, vendor network. So coming back again to your question, I am on day-to-day basis. I have a basically I have today as of now I have a 12 people team in under me. Previously, in my previous companies, I have handled about 60 people when I was in a people's management role. Here, as of now, I have 12 people. There are 3 or 4 people who are handling the network, basically getting new vendors in our vertical, and I am handling the operations as well. So daily, I we used to have customer queries. We have to give services to them. We have to check the revenue imbalance. We have to speak to the marketing team that what leads are coming, how the customers are coming to us, because this is basically B2C. Directly customers are coming to us. We do not have a B2B business here in this segment or in this vertical. So this is how my day-to-day activities works in. I speak to the marketing team, I speak to my network team as well. I handle operations, and this is how the day goes. Yeah. So if we talk about strategic projects, so how does strategic projects and alliance contribute to overall business? So, strategic as of now, I'm not handling strategic projects. I was handling in my last company. But coming back again to your question, basically, the company wants to enable different strategic projects because there are different strategies behind those projects. They want to emphasize on the things that how we can increase the revenue of the company, and there are some projects which via which you will not get revenue. But for an example, in this, I'll give you a brief example. Give you a small example on this. We are charging a customer. For example, a customer is stranded on road and his car is having a dead battery. We are providing him service for 500 or 600 rupees. For an example, I'm just giving you example, and the same cost I'm giving to the vendor as well. Vendor is coming from a location and charging, for an example, 400 to 500 rupees. That means I am not earning anything in this, but strategically, what I'm earning is I'm creating a brand image of Go Mechanic to the customer.
So he will always recall that whenever at during midnight with my family on the Dwarka Expressway or Gurgaon Expressway or wherever I was stranded on road, and go mechanic person came to me and give a service to me. So Yeah. we are creating a brand image by having different projects. So coming back to your question, how strategic projects is emphasizing strategic projects. There are different strategic projects. Say we are not getting the revenue, but creating a brand image. This is how we are enhancing a company's brand image through strategic projects. Yeah. So if we talk about as a student perspective, so what are the important skills for strategic roles a student should have if they want to Important go? skills, if you ask me the important skills, I mean, a student, if you are talking me, uh, one should have a persuasion in place. One should know how to pursue the other person. If we are specifically talking about key account management staff, you have to have the analytical skills to emphasize the other customer, or if in case you're talking about another stakeholder, which is our clients in this case. So for to speaking to a client, to emphasize, to buy a product or buy a services, one should have the analytical skills. One should have the persuasion in place, that how you can pursue the client, how you can manage the client. You have to understand the need of the client first of all, what the client wants. If you exactly understand what the client is asking from you, what the client's desires are, you would be able to pitch accordingly a product to him, and then only he will be thinking to buy that service or a product from you. Basically analytical stuff, persuasion, uh, and your analytical skills, persuasion, yeah, I mean, and basically relationship building is also very important. In case of key account management, you have to build relationship with the client. So he should have that confidence on you. Here मैं इससे जो मांग रहा हूँ ना, he'll be able to provide that too. That's again very important aspect. So if we're talking about the customer relationship, Yeah. with the customer relationship, so someone with experience in customer success and relationship management, how do you define an excellent customer experience? What is the definition Basically, of having that? I actually lost you in between. Can you please come again? Okay, so if you're saying about the customer desire, right? So how does someone with experience in customer success and relationship management, how do you define that excellent customer service or experience? This is very basic. Excellent customer service. If you ask me, basically customer in our service, in a customer service profile, you cannot think beyond customer experience. You just have to buy. जैसे बेसिकली घोड़ा होता है ना, एक चलते हुए उसके यहाँ पे ये होता है, आपको सिर्फ Yeah. सीधा देखना है. You have to focus only on the customer preference, customer experience. You cannot play with customer experience. In case you have received a query, and the person who's handling the customer call, or sending a vendor to the customer, I'm just giving you an example of my domain. If the customer wants a service, and you're sending a mechanic or sending a vendor or a tow truck to the customer location, you have to make sure while the customer is on call, you have to follow up with the customer, you have to show empathy with the customer. In case the customer is in a desire need, because in my previous company I handled medical cases as well. Therein we used to have foreigner visits to India, and in case the foreigner wants any medical assistance, ambulance assistance, or a house call doctor, or a customer, or I mean the patient wants to visit the hospital, you have to show empathy to the customer. And basically in a customer service profile, you can't even think beyond customer happiness, customer desires. You basically, customer is god in case you're in a customer service profile. That's how I would like to answer your question. Yeah. So it's basically about problem solving ability, right? Exactly. You basically, whatever the customer wants, you have to try and manage each and everything beyond that, whether it is network, whether it is vendor, your internal management, or anything. Whenever you are on a customer call, on a customer email, customer chat, if you're a customer service profile, you have to make sure whatever the customer wants, you are delivering it to him with a So proper satisfaction. So, like, it's not possible to predict a certain type of problem in that. But what should
what should students do to enhance that ability so that they can face any situation if there is a Basically, problem? I mean, you rightly said that it is not, I mean, it's not a rocket science to understand that you can't predict. But Yeah. basically, what a student needs to do is you have to focus on critical thinking or collaboration as well. You have to analytically or in and first of all, for overcoming any challenge, you have to understand the challenge. Only then you will be able to, I mean, you have to first understand whatever the challenge is. Only then you will be able to strategize how I should overcome that challenge. Basically, first of all, it is very important, whatever the challenge is, the anything that is hampering or that is giving you any challenge, you have to understand that this is my challenge, and then only I will be able to strategize how I'll be able to overcome those challenges. From a student perspective, if I may answer. Like it's very important to analyze first. Of course. Yeah. And your analytical thinking or skills comes into picture in that case. Okay. Yeah. You said that you have a team of 12 members and previously you had a team of 60 members, right? Yes. So when I joined that company in 2019, that was from the scratch. I had two people, and then I built that team during those 4 5 years. I hired people, and when I left that company, I was having around 58 to 62 people under me. Yes. Okay. So how important is teamwork and people management in achieving the goals, That's especially business goals? that's the most important thing. That's the most important thing. I'll uh, take this question one and two. First of all, if you ask me team management, that's the most important thing in the corporate culture. वो बोलते हैं ना, एक कहावत होती है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता. So Yeah. आपको you have to have your team in place. You आप अगर कोशिश भी करोगे कि यार मैं ये अकेला कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, हो सकता है फॉर एन एग्जाम्पल यू विल बी एबल टू सॉल्व वन और टू प्रॉब्लम्स, आपने कर लिया. बट इन केस इन फ्यूचर यू एक टीम के साथ चलना बहुत जरूरी है. I take an example not only from a corporate perspective. I have played corporate cricket as well for my companies. I have played in my college team as well. So I will take an example. कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी क्रिकेट का भी मैच होगा, कोई भी होगा, एक टीम गेम है अगर, और टीम स्पोर्ट है. सो यू कांट, आई मीन यू कांट इवन, एक अकेला सेंचुरी तो मार देगा, बट अगर बॉलर्स विकेट नहीं लेंगे तो वो मैच नहीं जीत सकते ना. तो वो टीम वर्क से ही होता है. And similarly, I have this experience in my corporate culture, corporate personal life as well. You will not be able to achieve your goals without teamwork. For an example, you are at a very high profile and you have different team members under you. Without their help, without their support, you will not be able to do everything. यू हैव टू, अगर आपने फॉर एन एग्जाम्पल कोई ऑपरेशंस देख रहा है, कोई मार्केटिंग देख रहा है, कोई बिजनेस देख रहा है, आप सबकी हेल्प से ही आप अपना गोल अचीव कर पाओगे ना. जब तक बिजनेस वाला बंदा आपके लिए बिजनेस नहीं लेकर आएगा, जब तक मार्केटिंग वाला कैंपेन्स नहीं चलाएगा, जब तक ऑपरेशंस वाला पूरी एसओपी फॉलो नहीं करवाएगा, आपका गोल अचीव नहीं होगा, कंपनी नहीं चल पाएगी. सो दिस इज टीम वर्क. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. It's basically And that what was your second? I mean, teamwork के अलावा you asked something else as well. people management. Yeah. So I, again, like I mentioned, I was having two people under me when I joined in 2019, and when I left, I had 60. So I have a lot of vast experience in people's management. So there were challenges. I mean, बहुत सारे challenges आपको आएंगे people's management में. People, there is one thing is will issue and one is skill issue. ठीक है. We have to understand कि will issue क्या है और skill issue क्या है. For an example, people's management में you have to understand कि skill issue is कि you have people under you, but they are not skilled enough to manage your work. नहीं है उनके पास वो skill. For an example, Excel is required. Excel आप सबको students I'm sure would know, आप college में भी use करते होगे Excel, Microsoft Excel. If in case I have a person in me और वो MIS managing information system की profile में है and he is not that well versed in Excel, तो वो skill issue. And as a manager, you need to manage him. अगर आपको पता है कि एक आपका एक एग्जीक्यूटिव है, उसके पास स्किल इशू है और उसकी वजह से आपका काम नहीं हो रहा है, तो देन एज अ गुड पीपल्स मैनेजर यू शुड अंडरस्टैंड कि यार हाउ आई, या तो मैं इसके स्किल्स इंप्रूव कराऊं, एंड इन केस अगर
अगर वो नहीं कर पा रहा है या वो नहीं करना चाहता है, तो फिर वो विल इशू हो जाता है. इफ इन केस ही इज नॉट इम्प्रूविंग, आप उसको इम्प्रूवमेंट के चांसेस भी दे रहे हो, आप उसको एक डिफरेंट डिफरेंट, यू आर इवन ऑफरिंग हिम separate different courses as well, but still he doesn't want to work, he or she doesn't want to work, then it transforms into a will issue. In that case, that person has will issue, यार मुझे करना ही नहीं है. So a good people's manager should be able to understand the difference between a skill issue and the will issue. That's the critical and the most important thing, and that I think I was able to achieve, because that's why I started with one as an operations manager, and during my tenure I started handling business as well, key account as well, and during last stage of my duration with them across assist, I was handling the network as well. So I handled everything during my 5 years of experience in across assist, because the company thought that, yeah, ये पीपल्स मैनेजमेंट भी अच्छा कर रहा है, क्लाइंट भी से कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है, और नेटवर्क भी मैनेज किया, वेंडर मैनेजमेंट भी किया. सो दैट्स व्हाई, बिकॉज कंपनी ऑब्वियसली मैनेजमेंट आल्सो थॉट लाइक दैट कि यार ही इज एबल टू मैनेज, तो फिर मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली उसके अकॉर्डिंग. सो पीपल्स मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज पीपल्स मैनेजमेंट के अलावा यू ऑल्सो हैव अनदर रोल एज एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर. ये आप सब अभी स्टूडेंट्स हो, बट कॉलेज में आके ये सारी टर्म्स आपको सुनने में आई एम श्योर आएंगी, इसलिए आई एम ट्राइंग टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर यू आर नॉट मैनेजिंग अ टीम, बट एज एन इंडिविजुअल यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू कंपनीज ग्रोथ एंड गोल्स. मिशन एंड विजन आप उसमें कर रहे हो, बट एज एन इंडिविजुअल कर रहे हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, अपना काम करके दे रहे हो. इन दैट केस यू आर कॉल्ड एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर. बट पीपल्स मैनेजमेंट में डिफरेंट होता है, जैसे कि मैंने. I mean, it sounds very difficult. Sounds difficult that managing 60 people under you, Yeah. understanding their perspective and analyzing every single problem individuals have. That's actually very difficult. I think people management is very difficult, and not everybody can do that, right? Not I'm everybody is sure. having I'm the sure skill. you're right. Everybody can't do that, but I would say कि if one focus and have some skills, क्योंकि यार people's management या leadership, if you ask me, वो inborn नहीं होता है. बहुत जगह पे over time you can develop that skill. Leadership can be developed over time, but learning, practice और experience से you will be able to get it. If आप अगर ओवरकम नहीं कर पा रहे हो प्रैक्टिस से, और कुछ कुछ ऐसा होता है, यू आल्सो हैव सम पर्सनालिटी ट्रेट्स, जिससे कि जो कि एक इंडिविजुअल के अंदर ऑलरेडी होते हैं, उस पर्सनालिटी ट्रेट्स वो लीडरशिप को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. बट ओवर टाइम ऑब्वियसली यू कैन डेवलप लीडरशिप. आई विल नॉट बी सेइंग कि एवरीबॉडी कांट. इफ एवरीबॉडी ट्राइज, आई मीन देयर इज नो स्टॉपिंग, यू कैन डेवलप But लीडरशिप. it's still very difficult. Handling people is It is. very difficult. Yeah, yeah. Handling But nothing is human, a difficult if group we of try humans. that. I will again stick to it. Nothing is difficult Mhm. if you try to your level best. I am sure you will be able to achieve. Yeah. So one advice, one or as possible as you can, advices you would like to give students who wish to pursue a career in business development or strategic consulting. What are the skills or what are the advices you want to Okay. give to us? So skills or strategies, I think one, obviously, if you're talking from a student perspective, a student needs to strategically align innovation or with the company goals. I mean, one has to think about the company, basically what company's vision and mission are. First of all, you have to understand, if you've joined one company and a company has a mission कि यार मुझे 5 साल में यहाँ होना है, so you have to align your goals with company's goals. This is the most important thing one should focus on. कि आप किसी और डायरेक्शन में चल रहे हो और कंपनी वांट्स कि आप इस डायरेक्शन में चलो, then आप स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाओगे. So you have to understand कि what is the company expecting out of me, what is my manager, what is my role, what is my team's goal focus. Accordingly, you have to analyze. Your analytical thinking should be there, your decision making power should be there. What is good for me and what is good for the company and what is good for team. लास्ट में इंडिविजुअल अपने बारे में सोचेगा, पहले कंपनी और अपनी टीम के बारे में सोचेगा. इफ यू हैव टू बी फोकस्ड इनफ to understand what is good for me and what is good for the company. I think I also didn't understood this, but if we create a roadmap for this, so what will be the first step? Like analyzing company's goal, then second? Uh, Understanding the mission and vision of the company. Okay. Where is the company focusing?
what is in next 5 years where the company wants to be. This is the main focus. And then first of all you have to understand कि मैं मेरे जो पाथ हैं वो कंपनी के गोल्स और पाथ से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं. अगर नहीं मिलते हैं तो यू शुड एनालिटिकली और डिसीजन मेकिंग करने के बाद आपको वो मिलाने पड़ेंगे. Otherwise, if the company wants you to go left and you're going right, then it will not solve the purpose. That's what I mean. So the priority should be understanding the company's goals and First of all, perspective. that's the most important critical thing. You have to understand कि आपने जहाँ पे आप जहाँ आए हो corporate culture में, wherever you have joined, the most important thing is to streamline yourself with the company's goal. Okay. And what about that strategic consulting? Sorry? What about strategic consulting? Strategic consulting. Yeah. Strategically, I mean, if you ask me, strategically, one has to think about what should I strategize about. Company, जैसे मैंने बताया कि company के goals और उसके according, जब आप if you'll be able to understand and identify the focus and the goal, accordingly you have to strategize according to the goals of the company. कि मुझे क्या कैसी strategies बनानी है. आपका decision making power, आपका analytical thinking, आपका जो growth focus होगा वो कंपनी के अकॉर्डिंग होगा या नहीं होगा. अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, इन दैट केस आप उसको स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो. अब कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, दैट ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन द कंपनी टू कंपनी. देयर आर डिफरेंट इंडस्ट्रीज. उसकी अकॉर्डिंगली आपको प्रोफाइल और कंपनी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज फिर बनानी पड़ेगी. So again, the conclusion is it's all about analyzing the situation and company's That's the most perspective and important thing. everything. Yes. Analyzing is very important. Yes. And for that So- you have to possess the analytical skills. डिसीजन मेकिंग पावर सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि यार वन शुड, ठीक है आप लोग स्टूडेंट्स हो, अभी बहुत कम एज है, बट धीरे धीरे विद मैच्योरिटी, विद कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू. एथिक्स, वैल्यूज, मॉरल्स, आई एम श्योर वो आप लोग अभी भी हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं और वो होगा, बट वो एथिक्स, मॉरल, वैल्यूज धीरे धीरे करियर के साथ साथ चेंज होते रहते हैं. जैसे जैसे आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आप एक स्कूल स्टूडेंट थे, फिर आप एक कॉर्पोरेट में जाओगे या आप एक पोस्ट ग्रेजुएशन हैंडल कर रहे हो, तो दैट डिपेंड्स बेसिकली, वो चेंज होता रहेगा. बट इंपॉर्टेंट इज कि आप अपने करियर पे या ड्यूरिंग योर कॉर्पोरेट कल्चर एज वेल आप वो एथिक्स और मॉरल्स को भूलो नहीं. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. So you have also you have worked in both startups and Can you please well-organized give me 1 organizations, minute? right? I need water. I'll just get a Okay, water okay. bottle. Just Okay, give me 1 minute. Okay. I'll be back. Sorry. Yes. Coming back to my Extremely question. yeah. Oh, it's okay. It's okay. I can understand. Please carry on. Yeah. So coming back to my question, that you have worked in both startups and well-organized institutions or Yes, organizations, yes. right? So how would you compare the work culture and opportunity growth in each of them, or like in both of them? So basically, different industry gives you different challenges. First of all, if you ask me, first of all, you need to understand the challenges. Whatever, I mean, if I start from a startup, in a startup you have vast growth opportunities. If in case you are a very small profile, you're a basic executive profile, and if you do well in a startup, and there are very small count of the people in the startup usually,
if it is a 35-40 people company and you are a executive there and you are doing a very good job in your profile, that then in that case you have a very good growth opportunity in a startup. Your work is easily visible to others. होता है ना कि यार सिर्फ 35-40 लोग हैं एक कंपनी में, and आप अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो वो बहुत इजीली विजिबल हो जाता है, टॉप मैनेजमेंट तक जाता है आपका काम, एंड दे आर ऑल्सो एबल टू सी यार कि दिस गाय फॉर एन एग्जांपल इज वर्किंग ऑन एग्जीक्यूटिव लेवल बट बहुत ही एक्सेप्शनल काम कर रहा है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक स्टार्टअप का। if in case if you compare with a big developed company which is not a startup basically, वहां पे आप ऐसा नहीं है कि आप काम करोगे तो आपका ग्रोथ दिखेगा नहीं, दिखता है वहां पे भी ग्रोथ, बट टू बेसिकली आप समझ रहे हो मेरी बात। जो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो एक स्टार्टअप के अंदर आप मैनेजमेंट को इजीली विजिबल हो सकते हो क्योंकि छोटी कंपनी है, बट वहां पे Maybe मान लो less कि crowd, less हाँ, crowd, less crowd. So एग्जैक्टली I would say एग्जैक्टली less. सो यू आर इजीली विजिबल टू द मैनेजमेंट, आपका काम Yeah. बहुत आसानी से दिख जाएगा। बट बड़ी कंपनी में शायद आपका आपका टीम का जो टीम लीडर है या आपका मैनेजर है Mm. वहीं तक जाएगा, वहां के सीईओ या सीओ आपको कभी जान नहीं पाएंगे। तो ये Yeah. एक बहुत ही क्रिटिकल, इफ यू डिस्कस प्रोज एंड कॉन्स, तो ये कौन हो जाएगा। बट वहां पे ये प्रो हो जाता है कि आपने कुछ भी काम करा तो एक बहुत एक्सेप्शनल काम किया तो एक अप्रिसिएशन आपको आती है जो कि डायरेक्ट सीईओ से आती है। ये बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि मैंने कुछ एक्सेप्शनल काम किया तो डायरेक्टली सीईओ इज अप्रिशिएटिंग मी। बट यहाँ पे वो आप कभी भी फॉर एन एग्जांपल आपने कंपनी में बड़ी कंपनी में 5 साल भी बताया यूएस बेस्ड एमएनसी में, वहां पे आपने बहुत एक्सेप्शनल काम किया, बट नेवर इन केस यू विल बी एबल टू स्पीक टू द सीईओ डायरेक्टली, जो कि एक एग्जीक्यूटिव लेवल के बंदे के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि यार मैंने डायरेक्टली सीईओ ने मुझे अप्रिशिएट किया, उसके लिए बड़ी बात है। उसको एक आरएनआर में अगर सीईओ ने उसको एक सर्टिफिकेट भी दे दिया ना तो वो खुश हो जाएगा। तो ये एक इफ यू कंपेयर विद अ स्टार्टअप विद अ डेवलप्ड कंपनी, वहां ये डिफरेंस आता है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, So in startup, there is more growth opportunity than well आई एम नॉट सेइंग, organized. नो नो, स्टार्टअप में ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग हाँ, यू। आप जल्दी okay. ग्रो कर सकते हो क्योंकि Hmm. इतना ज्यादा लेवल नहीं होता है। अब फॉर एन एग्जांपल अगर एक डेवलप्ड बेस्ड कंपनी है जो पहले से डेवलप्ड है, पुरानी कंपनी है, वहां पे इफ यू सी देयर आर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स। पहले सबसे पहले एग्जीक्यूटिव होगा, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव होगा। आई एम जस्ट गिविंग यू हायरार्की और डेजिग्नेशन बता रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव, देन सीनियर एग्जीक्यूटिव, फिर टीम लीडर होगा, फिर असिस्टेंट मैनेजर होगा, फिर डेप्यूटी मैनेजर होगा, फिर मैनेजर होगा, फिर सीनियर मैनेजर होगा, फिर एवीपी होगा, फिर वीपी होगा, सीनियर वीपी होगा। सो वहां पे डेजिग्नेशंस और हायरार्की पूरी डिफाइंड होती है। आपको ग्रो करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा क्योंकि आपको एक एक डेजिग्नेशन में जाना पड़ेगा। बट एक स्टार्टअप में ये सब नहीं होता, इतनी ज्यादा डेजिग्नेशन और हायरार्की नहीं होती। वहां पे आप इजीली ग्रो कर सकते हो। मतलब आपने कुछ एक्सेप्शनल किया तो सीधा आप एग्जीक्यूटिव से मैनेजर भी बन सकते हो, एएम भी बन सकते हो डायरेक्ट, जो कि वहां नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि स्टार्टअप में आई फील दैट्स व्हाई बेसिकली ये एक पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी और से पूछोगे तो शायद उनका किसी का डिफरेंट भी हो सकता है ओपिनियन। दैट डिपेंड्स, दैट वेरीज फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन। तो माय पर्सनल ओपिनियन इज कि स्टार्टअप में आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है एज कंपेयर टू अ ओल्ड सेटअप कंपनी। दैट्स व्हाट आई And फील। what about the work culture in startup and organized? अब इसमें इफ यूर आस्किंग मी अबाउट द वर्क कल्चर, आई कैन ओनली एक्सप्लेन फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस in which Yeah. companies I've worked in. So वहाँ पे US based MNCs, if I tell you, very US type culture, बहुत ही Like, चिल्ड आउट, बहुत ही चिल्ड आउट वहाँ पे। मतलब यू हैव योर कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट्स एंड एवरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एंड you in office pantry you have cold drinks and juices and chips and everything. So basically US based MNC थी तो सब US के हिसाब से था, जो कि वहाँ US के ऑफिस में होता है वैसा था। बट स्टार्टअप कल्चर में आपको ये नहीं मिलेगा। अब वैसा कल्चर नहीं होगा, थोड़ा रिजर्व्ड होगा, लोग सिर्फ काम करने पे ध्यान देंगे। बट यूएस बेस्ड एमएनसी में ऐसा होता है कि यार चिल्ड आउट कल्चर है, फ्राइडे को आपने लैपटॉप बंद किया तो वो मंडे ही खुलेगा उसके बाद। बट स्टार्टअप कल्चर में ऐसा नहीं होता है। you if in case your CEO is also working 24/7, you also have to be available 24/7. So यहाँ एक cultural difference आता है। और again if you specifically asking about the culture, तो यूएस और इंडिया में वैसे भी डिफरेंस ऑफ कल्चर बहुत वास्ट है।
अब बहुत ही डिफरेंट कल्चर होगा इंडियन कंपनी में और एक मल्टीनेशनल कंपनी में. So again, comparing these two is a very long topic. उसको लग जाएगा time explain करने में. But yes, again coming back to your question, कि cultural difference of course है, चाहे वो MNC हो चाहे वो Indian company हो, and दोनों का different experience है. Like I told you, match नहीं कर सकते ना difference कर सकते हैं. So yeah. So after hearing your statement, I think everybody who's present in this session will want to join US based MNC or like that. And that's what I'm telling you ना, दोनों के pros and cons हैं. And because I have both experience, so I can tell you. But with God's grace, whenever you have the opportunity, or any student who's listening to this session has the opportunity, आपको उस time ही पता लगेगा वो. So जो जिसके पास जो offer आए, जो वो ले पाए, that will be best for him or her. That's what I feel. You said about pros. I said about There will be any. You said about all the pros, right? प्रोज एंड कॉन्स. बेसिक कॉन्स जैसे मैंने बताया कि आपको Cons. 24/7 काम करना पड़ सकता है. आप इफ इन केस यू आर इन स्टार्टअप कल्चर, वहां पे आपको पूरे टाइम अवेलेबल रहना पड़ सकता है, कुछ भी आ सकता है. सो नोबडी वुड वांट कि यार मैं पूरा 24/7 काम करता रहूं, बिकॉज योर वर्क लाइफ बैलेंस इज आल्सो वेरी Yeah. important critical topic that I want to touch here is, without even you asking, work life balance. So that is very important, when you also have to give time to your family as well. People would have their parents at home, wife, kids, or spouses, or anyone. You also have to, very important critical time is, this is your life. You cannot give your 24/7 to your company only. One obviously has to think about their family as well. You are also answerable to them. You have to think about them as well. So work life balance in today's culture is also very important, and today companies are actually focusing on work life balance. फॉर एग्जाम्पल आई हैव मेंशन कि स्टार्टअप में इतना नहीं होता है, वहाँ 24/7 प्रेशर है. वो मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है किसी और स्टार्टअप में वो नहीं हो. So that is what I'm telling you is कि this is my opinion, that's my perspective of looking into the things. But different companies have different culture. But again, coming to the topic, work-life balance is also very critical at today's life in a corporate culture. There are different you I mean, you are not small. I think you guys also read news and everything. There are different suicides that have happened in Yeah. previous months in India only, Bangalore, Mumbai, jahan pe bhi, because of some pressure of work culture. So And also yeah, those exactly, were from exactly. big companies, big MNCs. So now government is also focusing on that, and corporate clients, corporate culture, big corporate players are also thinking about that, how to improve work-life balance of their employees. So that's also very, Yeah. I also agree, and everyone here will definitely agree on your of course, yeah. statement on that. So coming back to that successful team, so what are the key qualities do you look when building a very successful team? Like you said, you have a team of very good amount of people, right? 60 people. It's actually very much, very big team. So what are the qualities you see while building a successful team? I think if I've understood your question right, when I take an interview, when I HR comes to me and give me a CV कि यार ये interview के लिए आया है बंदा, इसको देख लो. So when I go to the interview, I want to hire somebody who, for example, has a skill issue. Again, coming back to the previous thing, skill issue हो सकता है उसके पास वो skills नहीं हो. पहले तो मैं इंटरव्यू में आई वुड नॉट वांट समबडी कि यार इसके पास वो स्किल्स नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, तो आई मेरे को उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. बट मेरे को एक, अगेन सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट आई लुक इनटू एन इंडिविजुअल इज ही और शी शुड बी अ टीम प्लेयर. अगर वो सिर्फ अपना ही सोच रहा है, मुझे एक इंटरव्यू में कुछ कुछ स्किल्स हैं जो मैं, जिस तरह मैं जज करता हूँ एक इंटरव्यू में, बिकॉज इंटरव्यू में आपको जज ही करना होता है. 10-15 मिनट्स 20 मिनट्स आप इंटरव्यू ले रहे हो, उसमें यू हैव टू फोकस ऑन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी, स्किल्स, विल एंड कॉन्फिडेंस. these are the most important thing. वो कैसा decision making है उसकी. If in case I'm hiring somebody for a customer service profile, तो मैं कुछ mock drills करता हूँ, कुछ mock interview लेता हूँ कि यार ऐसा, आपको एक situation देता हूँ, basically role play बोलते हैं उसको, कि आपने एक role दिया कि यार आप एक customer हूँ मैं और आप एक executive हो, तो how would you handle that situation?
So this is how I try to judge somebody when I have to hire someone in my team. I have a certain instances that I give to that individual कि यार ऐसे ऐसे होगा. So for an example, how would you react if a customer is stranded on road with his family during midnight? How would you handle? How would you give the empathy to the customer? How would you handle that medical criticality situation? So I try to judge the person on the confidence, on the empathy, and the decision making power first of all. And the foremost thing that I mentioned is one should be a team player. अगर आप एज अ टीम प्लेयर नहीं काम कर पाओगे तो मेरी फिर टीम और भी जो एग्जिस्टिंग बंदे हैं वो भी बिगड़ेंगे, उनका भी Hmm. मोरल डाउन होता है, इश्यूज आते हैं. सो दिस इज द मेन थिंग दैट आई लुक इनटू एन इंडिविजुअल व्हाइल हायरिंग. Apart from all of these things, there will be like analyzing thing, if you conclude that, analyzing power, or we discussed about that. That is Previously, basic, yes. right? Yeah, 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 yeah. that is basic. Yes. Sir, So, hello. yeah, yes, ma'am. Yes, sir. As you requested, should we continue or should we wind up? Sneha, how many questions do you have and more? Actually, I have a lot of questions, but still, if you will say, I will only I ask you actually have a one last meeting to question. start at 7 p.m. So if we can Okay. wind up in 5-10 minutes max, so that would Yeah, be yeah. One last question. One last no question. problem. I have 10 minutes. You can ask for three, 4 questions if you want. I have Okay. 10 minutes. So my next question will be, how do you balance innovation with operational efficiency in your projects? Uh, I think innovation is a very critical aspect in a corporate culture or in a corporate setup. Innovation is very important. So one needs to strategically align innovation with company goals. That's the most important thing. आप innovation बिना बात के कहीं पे भी कुछ भी करते रहोगे तो उसका कुछ फर्क फायदा नहीं होगा. इन केस आप जो प्रोडक्ट अपना या सर्विस, हाउ यू वांट टू इनोवेट दैट प्रोडक्ट. जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ, उसमें इनोवेशन ऐड करते हुए अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहा हूँ तो उसका कोई फायदा नहीं है. तो I want to इनोवेशन. add up something. I want या to add प्लीज. up something. I want this answer in two perspectives. In your perspective as leading a team, and in your team's mate perspective, who is actually working in that team. Okay, okay. I think I've understood your question right. Yeah. So like I mentioned कि कंपनी के अगर आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से जो टीम के हिसाब से सोचोगे तो उनका इनोवेशन कंपनी के गोल से अलाइन होना चाहिए. दैट इज क्रिटिकली. जो स्ट्रैटेजिकली अगर आप अलाइन कर पाओ उनके गोल को तब Mm, उसका कुछ फायदा है. और अगर इफ यू आस्किंग मी, तो mm. जो एक वर्कफ्लो है, स्ट्रीमलाइन वर्कफ्लो, एंड जो इनोवेशन टेक्नोलॉजी है उसको Yeah. बेसिकली ऑटोमेट करना. कैसे आप उसको कर सकते हो, इनोवेशन में ऑटोमेशन कैसे ला सकते हो या एआई को कैसे ला सकते हो कि जो मेरी टीम है उनका फायदा हो. अगर आपने मुझसे जो पूछा है कि मैं टीम के लिए Mm, पर्सपेक्टिव से कैसे सोचूंगा, सो एआई को लाके इफ फॉर एन एग्जांपल आई गॉट टू नो कि यार दिस इज वन टास्क दैट माय टीम इज डूइंग, डुप्लीकेसी आ रही है उनके काम में, वही काम एक बंदा बार बार करे जा रहा है. तो हाउ आई कैन इनोवेट और ऑटोमेट दैट प्रोडक्ट और दैट सर्विस और दैट टास्क, उसमें मैं इनोवेशन लाने की कोशिश करूंगा कि ताकि मेरी टीम को फायदा हो. जिस जिस टास्क को करने में उनको आधा घंटा लग रहा है वो टास्क 10 मिनट में हो जाए, तो वो मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसमें इनोवेशन ऐड करूं, सो दैट माय कंपनी इज बेनिफिट, माय टीम एंड माय कंपनी इज बेनिफिटेड आउट ऑफ. दैट्स mm. हाउ आई वुड लाइक टू आंसर. Okay. So the last question for today. Sure. There are a lot of students. So I lost your how voice. can so there are mostly students here in this session. So how can students prepare themselves to handle high pressure environment in corporate life? Okay, so I As if have a few. everyone will as if everyone will enter in 1 year, or who there are person who are entering this year in corporate world. So how they can manage that high pressure? If you basically if you ask me how to handle high pressure, I think adaptability and dynamic decision making power is the most important thing. आप एक सिनेरियो में आपको कैसे डिसीजन लेना है, कैसे डायनेमिक होना है, अडेप्ट करना है सिचुएशन में. प्रेशर आएगा ऑफ कोर्स. हर प्रोफाइल में हर एक, कोई क्रिकेट भी खेल रहा है, कोई कहीं पे भी कुछ भी प्रोफाइल में कर रहा है, प्रेशर वुड बी देयर. ठीक है. वो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपको वो अडेप्टेबिलिटी आनी चाहिए कि किस सिचुएशन में आपको कैसे अडेप्ट होना है.
किस में मुझे कितना रिएक्ट करना है. One should always have to, I mean, to just sum up this session, one should stay grounded. अगर आपको सक्सेस मिल रही है तो उस सक्सेस को पचाना, जैसे बोलते हैं ना, हजम करना. आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड इन इंग्लिश, बट हाँ, हजम करना उस सक्सेस को, उस विन को. यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड. अगर उस सक्सेस को देखने के बाद यू आर जस्ट फ्लाइंग एंड यू हैव एन एटीट्यूड, आप ये कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल यू विल फॉल डाउन. So staying grounded during your success is the most and important thing. And अगर उसके बाद अगर आपको फेलियर आता है तो उसको मतलब कैसे आपको ओवरकम करना है, उस फेलियर को रिफ्रेन करो कि मतलब उसको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लो. अगर आप फेल हुए हो किसी चीज में, आपको सक्सेस नहीं मिली है, फॉर एग्जाम्पल यू वर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उस बेसिकली उसको कैसे आपने एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखना है कि यार नेक्स्ट टाइम जब मैं ये स्किल्स के साथ कोई और प्रोजेक्ट में काम करूं तो वो फेलियर ना हो. सो टेक इट एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी. ग्रोथ माइंडसेट होगा और इम्प्रूवमेंट पे फोकस करोगे तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि मेरे को ग्रो करना है और इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है. अपने लिए भी सोचना है, सबसे पहले कंपनी के लिए सोचना है, फिर उसके बाद अपने लिए सोचना है. एंड अगेन लाइक आई मेंशन कि सक्सेस पे ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है. रिस्पेक्ट करना अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को कॉर्पोरेट कल्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्योंकि यहाँ पे मतलब पीपल यूजुअली से कि यार बहुत पॉलिटिक्स है यार, ये हो रहा है. आपको कॉलेज में भी सुनने को मिलता होगा, स्कूल में भी सुनने को मिलता है, ये सब हर जगह सुनने को मिलता है. बट आप उसको कैसे स्टिल हैंडल दैट सिचुएशन एंड बीइंग मोटिवेटेड कि यार नहीं, आई हैव टू डू दिस, और कैसे मुझे करना है, तो वो बहुत क्रिटिकल है. प्लस आपकी अगेन फेलियर को हैंडल ग्रेसफुल होके, ग्रेस के साथ हैंडल करना कि यार ठीक है, मतलब अगर मैं फेल हुआ हूं तो हुआ हूं, नेक्स्ट टाइम आई आल्सो टेस्ट सक्सेस. तो दैट इज माय मंत्रा जो मैंने फॉलो किया है. दैट आई वुड आल्सो लाइक टू गिव यू गाइस. दैट्स अबाउट So, इट. so we can conclude in this way that we should, throughout the journey, one should always be grounded and think positive and take all the failures in a very positive way. एग्जैक्टली देखो, Correct. वही मैं जस्ट रिआइटरेट करूंगा, रिपीट करूंगा कि फेलियर पे तो आप ग्राउंडेड रहोगे ही, तब तो आप उड़ भी नहीं सकते जब आप फेल हुए हो. बट सक्सेस पे ग्राउंडेड रहना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई कोई टास्क था या कोई कोई प्रोजेक्ट आपको मिला, वो बहुत अच्छा गया आपका. उसके बाद आप बिल्कुल यार मैं तो अपने कलीग से बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अपने मैनेजर को ही कुछ नहीं समझ रहा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड स्टे ग्राउंडेड while you were working, while you tasted success. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली साइड बाय साइड फेलियर के साथ जब आपको फेल हुए हो आप, तो उसको ग्रेसफुलनेस के साथ एक्सेप्ट करना और उसको एज अ लर्निंग कैपेबिलिटी, लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेना. दैट्स how I would like to conclude. Yeah. So this is it for my side. Thank you so much. And now, if someone else want to ask something, they can. Yeah, anyone wants to ask any questions? Put your questions either on chat box, raise your hand. इशिता, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ Sure, sir. अबाउट रोहन. रोहन के बारे में तो मैं जितना बोलूं उतना कम है, क्योंकि रोहन को तो मैंने देखा है. सभी को बता दूं कि जो आपके को करिकुलर एक्टिविटीज है कितनी जरूरी होती हैं. रोहन वॉज अ वेरी वेरी फाइन प्लेयर इन क्रिकेट. बहुत अच्छी बैटिंग करता था. मैंने देखा है रोहन को. ठीक है. और रोहन उसके अलावा भी एकेडमिक्स में भी अच्छा ही करता था. ठीक है. अगर मैं कह दूं नहीं करता था, बहुत अच्छा था. और रोहन में ना मैंने कॉन्फिडेंस शुरू से देखा है. ठीक है. और शुरू से इसमें देखिए, कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है. कॉन्फिडेंस आपके पास नॉलेज है तब आती है, और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके अंदर कोई स्किल होता है. तो रोहन, मैं एक चीज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कॉलेज की एक नॉर्मल सी हम एक जनरल डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, बीए, बीकॉम, बीएससी, आपका बीसीए, क्या ये डिग्रियां लेने के बाद क्या हम सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में? नहीं सर, ये सिर्फ एक पार्ट है. ये एक छोटा सा पार्ट है. मैं इसको बहुत बड़ा भी नहीं बोलूंगा, ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है जिसके साथ आप सक्सेस शायद आप टेस्ट तो कर लोगे, बट आप उसको एलोंगेटेड सक्सेस नहीं होगी. वो एक दिन या एक प्रोजेक्ट में आपको सक्सेस मिल जाएगी. हो सकता है कि जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो वो आपने अपने कोर्स में पढ़ा हो तो आपको मिल जाएगा. बट ओवरऑल अगर आप करियर में और अपनी लाइफ में सक्सेस देखना चाहते हो तो उसके लिए बहुत सारी और चीजें हैं
जो आपको बहुत जरूरी हैं आपकी लाइफ में, करियर में, वो पोजेस करना, वो स्किल्स पोजेस करना, वो कॉन्फिडेंस जैसा कि आपने बोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सीरियसली आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं कहीं पे भी अपनी अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी, अपने स्कूल की तारीफ करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने जो कुछ सीखा वहां सीखा। एक लाइफ में ना, करियर में आप जब आते हो ना, कॉलेज में एक लेवल तक आपको सिखाया जाता है, एक कोर्स है। मैं कहीं पे भी ये अगेन आई एम रीआइटरेटिंग माई सेल्फ कि ऐसा प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज या नेगेटिव, कि सब कुछ लेकिन आप अपने कोर्स में, अपने स्कूल में नहीं सीखते हो। आप जब कॉलेज से, स्कूल से बाहर निकलते हो ना, और जब लाइफ में आते हो, आपको पता है कि आपके टीचर्स यहाँ पे नहीं होंगे सपोर्ट करने के लिए, आपके साथ के जो फ्रेंड्स हैं वो नहीं होंगे। और एक्चुअली मैंने जब अपने बीबीए, मैंने सर जहाँ पढ़ाते थे, आईआईएमटी एक कॉलेज है दिल्ली में, वहां से, और उसके बाद फिर आईपी यूनिवर्सिटी रुक्मिणी देवी से मैंने एमबीए किया। उसके बाद जब मैं बाहर निकला ना कॉर्पोरेट कल्चर में, तब मैंने एक एक चीज होती है सॉफ्ट स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आप सब आज सुनते होंगे, आई एम श्योर यू ऑल वुड नो, आपने सुना होगा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स कम्युनिकेशन स्किल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपको, मैं अपनी बहुत तारीफ नहीं करूंगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अमेजिंग है, लेकिन जो भी है ना, जो कुछ भी मैंने स्कूल कॉलेज में सीखा, उसके बाद जब मैंने कॉर्पोरेट फर्स्ट कंपनी ज्वाइन करी, मैंने आई थिंक मैंने इसकी बारे में बात नहीं करी, बट स्टिल मैं 5 मिनट आप सबके और लेना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, जो कि शायद जरूरी भी हो, कि एमबीए जब मैं कर रहा था ना, सो रुक्मिणी देवी से मैंने एमबीए किया। वो एक रेगुलर कोर्स था, रेगुलर एमबीए था, वहां से कोई कॉरेस्पॉन्डेंस आईपी यूनिवर्सिटी से वैसे भी नहीं होता। तो जब मैंने अपना मेरा इंटर्नशिप था, 2 सेमेस्टर्स के बाद इंटर्नशिप ज्वाइन करनी थी, देन आई ज्वाइन दिस कंपनी एक्सा असिस्टेंट्स, जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी। जब मैंने वहां 2 महीने जॉब करी, एज एन इंटर्न ही जॉब करी थी, और फिर मेरा थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होना था एमबीए का, और मैंने अपने कॉलेज में, सॉरी ये ऑफिस में, एक्सा असिस्टेंट्स में बोल दिया कि आई विल नॉट बी कंटिन्यूइंग माई इंटर्नशिप, क्योंकि मेरा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। बट उन्होंने, जो मेरे सीनियर्स थे या जो मैनेजमेंट था, उन्होंने मुझे कभी जाने ही नहीं दिया वहां से, कि जैसे भी मैनेज कर, मतलब बाय गॉड्स ग्रेस, और मेरी मेरी फैमिली में ऐसा कोई फाइनेंशियल इशू नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट मेरे को, बस मैंने ऐसे ही जॉब करी थी, वो एज एन इंटर्न जॉब करी थी, बट मैं वो कभी छोड़ ही नहीं पाया। आप यकीन मानो कि मेरे पर कोई प्रेशर नहीं था, मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं वो जॉब छोड़ दूं, बट मेरे को, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मेरी प्रोफाइल ऐसी थी मेडिकल असिस्टेंस वाली, कि मैं वहां पे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के लोगों से बात करता था, तो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इतने इंप्रूव हुए उससे कि मुझे वो बहुत आगे फायदा हुआ। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट कंपनी में आया, तब भी मैंने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके के लोगों से बात करी, तो मुझे बहुत हेल्प मिली उससे, क्योंकि प्रीवियस कंपनी में वो कर कर आया था। आप, मैं मतलब किसी की, अगेन आई एम नॉट डिसग्रेसिंग एनीवन, बट अभी आप अगर किसी ऑस्ट्रेलिया या यूके या यूएस के बंदे से बात करोगे, तो उनका एक्सेंट समझने में आपको बहुत बहुत मुश्किल होगा। लेकिन क्योंकि मेरे को वो प्रैक्टिस थी, तो वो मेरे करियर में आगे मुझे बहुत फायदा हुआ। मतलब नो बडी वॉन्टेड, माई फैमिली डेंट वॉन्ट कि आई शुड वर्क, बट स्टिल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो कॉलेज रोहिणी में था। आप सबने रुक्मिणी देवी के बारे में जरूर सुना होगा, आप आईपी के स्टूडेंट्स हो। मधुबन चौक पे रोहिणी में वो कॉलेज था। मेरी कंपनी थी साउथ दिल्ली में, डिफेंस कॉलोनी में, और मैं रहता हूँ आनंद विहार में, ईस्ट दिल्ली में। तो कभी कभी महीने में एक बार ऐसा होता था कि मैं घर से ईस्ट दिल्ली से निकलता था, और मेरी इवनिंग बैच था मेरा कॉलेज का। मैं वहां पे इवनिंग बैच पूरा अपना कंप्लीट करके, 5 घंटे का कॉलेज, उसके बाद मैं ऑफिस नाइट शिफ्ट करता था, और उसके बाद वापस मैं अगले दिन फिर कॉलेज करके मैं घर आता था। ये महीने में 2 बार होता था मेरे साथ, जिसके लिए मेरे पेरेंट्स अगेंस्ट थे कि भाई तू क्या कर रहा है, तू अपनी एमबीए पे फोकस कर। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, ना कोई फाइनेंशियल वो था, कुछ भी नहीं था। बट मुझे था कि यार अगर मैं ये करूंगा, उसका मुझे इतना फायदा हुआ ना। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि एमबीए में जब कंपनीज आई, रुक्मिणी देवी में जब कंपनीज आई मेरे फोर्थ सेमेस्टर में, तब जब मेरे कलीग्स, जो मेरे साथ में स्टूडेंट्स थे, वो जो एज अ फ्रेशर बैठे थे, बट उस टाइम मेरे पास 6 महीने का एक्सपीरियंस था, और वो एक्चुअली मेरे को उसका फायदा मिला। हालांकि मैंने कोई कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करी, मेरा अलग से हुआ था कहीं और, जो मेरा हुआ था, बट मेरे को ऑब्वियसली उसका फायदा हुआ। जब इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे और मेरे साथ वाले के कंपेयर किए गए, तो मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। सो दैट्स व्हाट, जो सर ने जिस तरह टच बेस किया उस पॉइंट को, वो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि कॉलेज ऑफ कोर्स आपको बहुत कुछ सिखाता है, आपका स्कूल सिखाता है, बट जब आप बाहर निकलते हो ना, जब आपका लास्ट सेमेस्टर खत्म होगा और आप बाहर कदम रखोगे, तब आप अकेले होते हो। तो वो बहुत क्रिटिकल टाइम होता है, और उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना बहुत जरूरी है। पहले से प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है कि कल को
आज मैं आपको ये सेशन दे रहा हूँ, हो सकता है 3-4 साल बाद सर आपको कांटेक्ट करें और आप ये सेशन दे रहे हो, एंड वो सर के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी, आई एम श्योर, जैसे आज मेरे लिए और सर के लिए भी होगी शायद। तो वो एक रोहन रोहन रिलेशनशिप मेंटेन करना। रोहन मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है। मैं एक चीज बोलता हूँ, जो बेसिक वैल्यूज तो अब खत्म होती जा रही हैं। मॉरल वैल्यूज की अगर बात करूँ, तुम लोग ना संपत्ति हो हमारी, ठीक है, संपत्ति हो, और तुम लोगों को हमने कमाया है। मैं तो अचानक से एक दिन वो तुम्हारी मिस्ड कॉल आई। मैंने कहा जी सर। रोहन, तुम्हारा नंबर 2010-11 से अभी तक मेरे पास है ना। ये मेरे लिए भी एक फक्र की बात है, तुम्हारे लिए भी फक्र की बात है कि जी सर। और उसके बाद मैंने तुम्हें एक बार ही बोला और तुम मान गए उस चीज के लिए। और देखो ये चीज क्या होती है कि एक लेगेसी है। तुम्हारे जूनियर्स हैं ये सारे के सारे जो बैठे हैं, जी इनको सर। आगे सही तरीके से मेंटोर करना, इनको आगे लेकर जाना, वो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। ऑल्दो यू यू डोंट बिलोंग टू आर कॉलेज, ठीक है, यू यू यूज टू बिलोंग टू माई कॉलेज, आर यस कॉलेज सर। जो हमारा आईएमटी था, बट ये नहीं है, ठीक है, ये वाला नहीं है। पर उसके बाद भी ये सारे के सारे आने वाली जो जनरेशन है, उनको सही तरीके से मेंटोर करना, उनको उनको सही दिशा दिखाना। तो अगर मुझे, मेरे पास तो पता नहीं कितने लोग आते हैं, फोन भी आते हैं कि सर इसको आगे क्या करना चाहिए, हमारे बच्चे को क्या करना चाहिए, ये कर रहा, तो उसको सही तरीके से हम बताते हैं। तो वही चीज है, यू आर डूइंग द सेम थिंग फॉर द सेक यस ऑफ सर। DSPSR स्टूडेंट्स, फॉर द सेक ऑफ आवर फ्यूचर ऑफ द कंट्री, ठीक है। और यस ये सर। इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड एंड प्राउड एज वेल, दैट यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी टुडे एज अ गेस्ट। जो कभी सामने सामने वाले डेस्क पर होता था लड़का, वो लड़का बिल्कुल सामने एज ए गेस्ट, मैंने उसे इनवाइट किया, वो लड़का सामने बैठा हुआ है। तो ये चीज है, ये चीज कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से मतलब तुमने जमीन से स्टार्ट किया, और जमीन से लेकर फर्श से लेकर अर्श तक का जो सफर तुमने तय किया है, ये तुमने बहुत बड़ी बात बोली। आज तुम बैठे हो, 3-4 साल बाद हो सकता है कि कोई और बैठा हो। जी सर। ऐसे मेंटोरिंग, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात। और मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमारे कॉलेज के 2-3-4 बच्चों को कम से कम उनके मेंटोरिंग करो। और बहुत जल्दी इशिता मैम बैठी है, इशिता मैम जल्दी से तुमको बच्चे अलॉट कर देंगी, और उनको सही दिशा दिखाओ कि उन्हें करना क्या चाहिए मार्केट में बने रहने के लिए, मार्केट में पहला स्टेप रखने के लिए उन्हें कौन से स्किल सेट की जरूरत है। और अभी तो हम स्टार्ट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, 6-8 महीने का प्रोग्राम है। और बहुत नॉमिनल फीस रखी है, फीस बहुत ज्यादा, उसकी बहुत नॉमिनल फीस रखी है, कि बच्चे को ग्रेजुएशन के बाद किसी और जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। सीधे amazon, गूगल, कॉरपोरेट ट्रेनर्स आएंगे, उन्होंने एक सिलेबस तैयार किया है, और सीधे वो ट्रेनिंग देंगे, और आपको सीधा एग्जाम लेकर आपको सीधा अंदर ले लेंगे। इससे बड़ी चीज क्या है यार, ग्रेजुएशन के बाद अमेजोन आपको पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा, गूगल आपको नहीं पूछ रहा। गूगल तो उठाते बीटेक बीटेक लेवल के लोगों को, या बड़े बड़े, हम 20 स्कूल्स की बात करें वहां से लोगों को उठाता है। हम आईपी यूनिवर्सिटी की बात करें, आईपी यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा कॉलेज है DSPSR, उसकी बात कर रहे हैं, तो वहां से अगर उठाते हैं, तो यार अब अभी कोर्स हम ऑफर कर दिया बच्चों को, बस एनरोल करने वाली बात है, और हम करेंगे। और मैं ये सोचता हूँ, ऐसा चाहता हूँ कि तुम भी हमारे 4-5 बच्चे जितने भी ले पाओ, उनको सही दिशा में तुम आगे बढ़ाओ, और ताकि तुम्हारे स्टूडेंट्स कहलाए कहलाए वो सारे के सारे, और तुम एक टीचर बनो, तो तुम एक टीचर का दर्द भी जान पाओगे, टीचर का दर्द क्या होता है। श्योर सर, श्योर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं जैसा आप कहें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई स्टे इन टच और मैं बिल्कुल बताऊंगा, करूंगा सर। Thank you so very much, Rohan. Thank you so much for being the part of DSPSR, for being the part of evening session as a corporate mentor. I wish you थैंक यू all the सर, very थैंक best. यू अगेन। God bless you always with the best you deserve for. Thank you, Rohan. थैंक यू सर, थैंक यू अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। Thank you so much again. Thank you so much, sir. It was really wonderful session and inspirational session for our students. Now we are proceeding for vote of thanks. Anvi, are you there? Hello, Anvi, are you there? Yes, ma'am. Okay. Go ahead with formal vote of thanks. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We are truly grateful for the presence of our distinguished speaker, Mr. Rohan Thareja, sir. Your valuable insights into strategic leadership, professional growth, and corporate excellence have made this session deeply enriching and motivating for all of us. On behalf of DSPSR, I sincerely thank you, sir, for sharing your time, knowledge, and experience with us. I would also like to extend my heartfelt gratitude
to Miss Neha for moderating this session with such poise and thoughtfulness. My sincere thanks also go to our respected dignitaries, faculty members, and my dear fellow students for their active participation and continuous support in making this event a grand success. Thank you all and have a wonderful evening ahead. Thank you.